किशन की दुआओं में इतना तो नजर आए, मैं दुख में जो आज अपन को ऐसी नहीं चाहिए वीडियो। बाप रे, लेट्स गो, नोटिफिकेशन इज हियर। देखो आज मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, कि ना एक सेकंड में चेक कर लो, ऑडियो इज ठीक है ना? माइक चेक 1 2 3। चलो ऑडियो इज परफेक्ट, ऑडियो ऑडियो सब सही है। आज आज क्या करा जाए ये बताओ तुम लोग। एमबीएन जापान, अच्छा जापान तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा बस, उससे ज्यादा अपन से नहीं हो सका था। और बताओ गाइस आज क्या करा जाए, बताओ बताओ। अच्छा मैं आज सोच रहा ना Q&A करा जाए। 35 के नहीं, वे 50 के होने दो भाई, 15,000 और चाहिए बस। पिन मैसेज, क्या डिस्कॉर्ड होता है ना? अरे यार रुक जाओ, मैं यहाँ पे ना लॉगिन कर लूँ डिस्कॉर्ड पे। लॉगिन, अरे यार मेरे को अपना मेल आईडी चाहिए। नीड एन अकाउंट रजिस्टर, ओके। किशन की दुआओं में इतना तो नजर आए हैं। अरे यार रुक जाओ। अच्छा तब तक ना चैट तुम लोग अपना हाल चाल बताओ थोड़ा। ये ज्यादा सही है। रिप्लेस पिन मैसेज, रिमूव। व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे क्या कर रहे थे? लेट्स प्ले दिस, अन नरूटो का गेम खेलते हैं। अन नरूटो का गेम खेलते हैं, क्या बोलते हो? अभी चलो, परसों परसों नवरात्रि खत्म हो जाए, मतलब कल रात को ही हो जाएगी वो तो, कल आखिरी दिन है। फिर परसों अपन बाल वाल कटाएंगे नहीं परसों क्या है भाई? अब यार एक सेकंड, कल संडे है ना, परसों मंडे। हाँ वही वही ट्यूसडे है। ट्यूसडे के दिन कैसे बाल कटा ले? फिर वेडनेसडे यानी कब कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। अबे 26 से तो मेरा पेपर है। आज जब अपन के पास कुछ खेलने को नहीं होता, आज ऐसा करते हैं ना अपन, कोई कुछ कोई किसी के भी डिस्कॉर्ड में जाके बैठेंगे आज। किशन की दुआओं में इतना तो नजर आए, मैं दुख में जो रहूं तो, दुख में जो रहूं तो महाकाल नजर, मैं दुख में जो रहूं। अब यार मेरे को, मैं वापस डाउनलोड कर लूं क्या वैलोरेंट? कर सकते हैं। आज आज क्या खेले जाए यार, ये बताओ तुम लोग गाइस फटाफट से।
What should we play today? La 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 la. हाँ कसम मजे तो इन्हीं के हैं भाई। किशन की दुआओं में इतना तो नजर आए, उज्जैन में पहुंचूं तो। हाँ देखो फालतू की आज अपन बकवास नहीं करते, आज अपन खेलेंगे वापिस से हमारा तुम्हारा सबका प्यारा गेम। यार इन लोग ना मेरे साथ धोखाधड़ी करते पता है। सही है भाई इन लोग का भी। अब क्या ही बोले, बस जो चीज तुम लोग को पता लग गया है वैसी कुछ सीन होगा इसका। आज अपन ऐसा करते हैं ना, कुछ 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 करते हैं। मेरे को कुछ मजेदार नहीं दिख रहा है आजकल करने को। आज ऐसा करते हैं ना, किसी और के डिस्कॉर्ड में बैठूंगा मैं आज। आज अपन बैठेंगे बीबीएफ भाई के डिस्कॉर्ड में। चलो एनीमे पे बातचीत आ जाओ। माँ कसम। अबे यार तगड़ा सीन वे तगड़ा सीन। रुक जाओ हिटमैन ओपन कर लूं मैं। इधर फेस कैम का क्या दिक्कत है? चलो ठीक है स्क्रीन शेयर चालू। आज अपना सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है। अरे हाँ यार मेरे को ना गाइस तुम लोग से कुछ ओपिनियन चाहिए था, ठीक है? जो तुम मेरा सेटअप देख रहे हो उसके रिलेटेड मेरे को यहाँ पे ना तुम लोग से कुछ ओपिनियंस चाहिए थे। सो देखो मैं कल या आज नहीं हो पाएगा। कल एक रील डालूंगा, ठीक है? जिस रील में कुछ ऐसा रहेगा कि मैं एक तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा एंड तुम लोग को उसका कमेंट्स में बताना कि मेरे को क्या क्या कर सकता हूँ। हिंट दे रहा हूँ, सेटअप से रिलेटेड रहेगा। सो कल मैं एक रील डालूंगा या फिर शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, दोनों जगह डाल दूंगा। कल डेली तो अपना शॉर्ट्स आता ही एक है, देन उसके अलावा भी मैं एक रील डाल दूंगा, एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स और इंस्टा पे एक रील डाल दूंगा जिसमें कि देखते हैं भाई जिसको कमेंट में सबसे अच्छा होगा ना वो चीज़ मैं अपने सेटअप पे ऐड करूँगा, मतलब जो मेरे को अच्छा लगेगा। सो सीन कुछ ऐसा है। सो देखते हैं भाई। मेरे को अभी जब देखो करवा ही रहा हूँ ना तो मैं बोला कि अच्छे से करवा लेते हैं। भले मेरे को 2 साल बाद ही शहर छोड़ के कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा पढ़ने, मतलब उसके लिए जॉब वॉब के लिए। सो बाकी अपन नहीं बता सकते। रिमोट जॉब मिल जाए मैं तो यही चाह रहा हूँ भाई। मस्त अपना आराम से घर में बैठ के चिल रिलैक्स करो। सुबह से शाम जॉब, शाम को आराम से आए मस्त लाइव कर रहे हैं। ये शाने ऐसा मजे कर रहे हैं मस्त, ठीक है? एंड अभी तुम लोग को जो साउंड आ रहा है हिटमैन अपना शुरू हो चुका है बैकग्राउंड में। सो आओ फटाफट से। वैसे भी डिस्कॉर्ड पे कोई आता है। अच्छा तल्हा भाई के मैंने न्यू वीडियो आ गई। जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट। अच्छे तो मेरे देखा भाई। की हाल चाल सत श्री अकाल, मेरा नाम है नियॉन मैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। तो फटाफट से अब चप्पल फेंक के मारो या जूता फेंक के मारो, सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। लेट्स गो एंड प्ले। वे ठंडी बढ़ गई है गाइस। अच्छा मैं तुम लोग को एक चीज बताना भूल, छोड़ो तुम्हारे काम का भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कौन से में जाए? 1 1 2
3 4 5 6 7 8 21 मिशन से 21 में से तुम्हें कोई रैंडम नंबर गैस करो। आई गेस मार पीटा के लिए ये ठीक है। लेट्स डू दिस। अच्छा स्मगल्ड आइटम भी नहीं कर सकते। डिस्गाइज डिटरमाइंड है। अच्छा ओरिजिनल मेरे को चाहिए भी यही था। तुम लोग 1 से 21 में गैस करो कोई भी एक रैंडम नंबर एंड देन उसमें से जो भी होता है वो अपना ये हो जाएगा मिशन नंबर। सो देखते हैं जिसका गैस आता है, जिसने सबसे पहले गैस करके। अरे हाँ ना ठीक है हम इधर ही हैं। Agent 47 clinging on to your self-image. Agent 47, the apex predator. अब इसको इसका पास याद दिलाएंगे। Always hiding behind the headlines. अरे इसको भी तो मारे थे हम। Was perfection its own justification? Or a willful distraction? ये कौन है? A wall built contract by contract. भाई ठंडी लग रही है बे। मेरा तो एसी भी बंद है अभी। रेड tool they bred you to be. भाई साहब इन सब को मारा था। Quite a piece of work you are. 720 possibly function on your own. You never even had a name. Until I gave you one. That's him. Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Prepare the serum. Forgetting's not so bad. You've done it before. हैं? खैर मेरे को तो स्टोरी पता ही है। Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. बाप रे। He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Are you done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. अरे ठीक है ना भाई। Come on. पिंग भाई का क्या वीडियो था? स्टोरी ऑफ द हॉन्टेड ओक क्यूब और अच्छा यार डेविल मे क्राई वापस खेलने का मन कर रहा है मेरे को। She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. Let's go. You do know. Once you dispose of Edward, अच्छा I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Oh my god, so तगड़ी स्टोरी भाई साहब।
अबे कुछ चाकू वाकू अपन ऐसे ही जाएंगे। भाई इसको इसके कपड़े तो दे दे। भाई मेरे को एक गन मिल जाए। We need to find a catchy name for it. For when we go commercial, I mean. You figure this thing has commercial applications? Who'd want to have their minds wiped? Not wiped, obviously. But that's just fine-tuning. Okay, right now the serum erases long and short-term memory banks wholesale. But in a couple of cycles, क्या चीज़ है ये? we'll be able to isolate the effects to individual memories. था अरे Imagine if you could pluck out childhood traumas, ugly breakups, combat trauma. Huh? Stop that right now! Let them leave! Okay, let's go. $1979. कौन आया भाई? वाइफू लवर
माय खाड। मैं क्या सेटिंग कर रहा था, कुछ नहीं। अगर हमारा कोई दोस्त आए ही तो ही हम कर ही, बाकी मेरा भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले भाई अगर तुम उधर से आए हो तो। डिस्कॉर्ड इंस्टा सब है अपन अपने हाथ में। अरे यार लोड वापिस से तो इतना मैं नहीं करने वाला भाई। तुझे परांदा तेरा तुझे परानी। आई गेस पर उधर था भी नहीं कुछ। हाँ जान दो। खैर रस्टी नेल ही था। अरे तुझे परांदा सादा तुझे परांदा। आलू ये कैसा नाम है? ईबी ये कौन सी एंजल आवे भाई? ओ माय गॉड। अच्छा एनिमेटेड वीडियो है। खैर मुझे क्या एमबीएन जापान देख।
अपन आपसे अपनी पुरानी हरकत वापस शुरू करेंगे दोस्त। We got a 187. Let the hunter go! Kill out fire will! You get a look at the guy. Can you ID him? तुझे परांदा तेरा तुझे परांदी तेरा तुझे परांदा साधे हाथ शर्मा अपने को चाहिए गाना। अब भाई अब टाइम है, लेट्स गो। अभी अपन चखाएंगे दोस्तों इसकी मजा, इसके बाद फिर अपन खेलेंगे नारुतो। Ether Corporation bought this train for sample backup storage. But since the bombing at their R&D site in Johannesburg, they're refitting the cars as a mobile... Shit! Hey, come on! Okay.
देख रहे हो गाइस, तुम्हारा भाई कितना प्रो है। तो दोस्तों मैं अभी एक मिशन पे हूँ। ये चिलगुजे मेरे को मारेंगे, इतने बड़े हो गए। अबे बच्चे हो बच्चे। अरे पगला साला, फिर लोड करो। अलग कंझट है भाई ये। Hey, contact! I see. Get him in your sights. Pull that trigger, gents. One, two, four. Got you, brother. I got a better. Fine.
और बाबा फ्री द फायर वाले लोग भी आए थे। बात करनी हो तो लाइव पे आ जाओ यार। This is the best gun, but I'll prefer this. उसकी जगह अपन ये पकड़ेंगे। तुझे पर आंदा तेरा लक दसवा नी। खैर मुझे क्या, मैं तो ये पकड़ूंगा। अरे यार दरिद्रों के बादशाह। आई गेस मेरे को इधर ब्लाइंड कर देना चाहिए।
हाँ बेटा आओ। What are you waiting for? Fuck him out. It's over here. Think. Voice of the people. Just think of everything. Can't see him. Can't see him. Can anyone see him? Suspect's not here. Roger, command. Nothing tangible yet. Still looking. Will do. Out. Stay low! Stay low!
Oh my god! Hey, we need some help here. I'm in love. Hey man! चले अंकल जी को नहीं मारूंगा, इसको मारूंगा। अंकल जी हरामी आदमी नहीं लग रहा मेरे को। जाओ अंकल ऐस करो। Agent 47. I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. आय हाय मेरी गन। हैं? इतना कि किशन की दुआओं में इतना तो What are you doing? No! No! This is what it means to lose everything. You're making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me. I seem to have, What were we talking about? Don't worry. We were done.
Until now, new deal. हैं? ये सब तो प्राइवेट हुआ करते थे। खैर मुझे क्या। कि शम की दुआओं में इतना तो नजर आए, मैं दुख में जो रहूं तो मैं दुख में जो रहूं तो बाबा नजर आए। प्लेग्राउंड वालों, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। क्या सीन माम। बहुत डरावना अंदर से रोते हुए देख रहा, पता है वो लोग इतने परेशान हैरान। तो ऑनलाइन शॉपिंग ही बट नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ माय अपार्टमेंट व्हिच अच्छा अपार्टमेंट दिखाते हैं। But first, let's quickly do an outfit of the day. So this is my outfit for today. मैंने green top पहना है and you know कि green और beige एक साथ कितना अच्छा। मेरे को तो हरा कलर, अच्छा ग्रीन वही होता है। अच्छा मेरे को तो आज पता चल रहा है। तो मेरा अपार्टमेंट है, मैं उसके साथ ऐसे वाइब कर रही हूँ आज, मैचिंग हो रहा है। एंड इस पे एक कैट भी बनी है क्यूट सी, व्हिच इज सो क्यूट एंड एस्थेटिक। बट हाँ, इसके अंदर मैंने पहनी है अपनी ग्रे ब्लैक जीन्स जो मैंने नैनीताल से ली थी एंड बहुत ही जिद करी थी इसके लिए। बट फाइनली आज मैं एक आउटफिट में पहन रही हूँ इसे एंड इट्स सो नाइस, सो कूल। मैंने पहनी अपनी डार्लिंग वेलिंगटन वॉच जो मैं रोज पहनती हूँ। भाई 1,23,000। ये हेयर क्लिप, ओह माय गॉड, बटरफ्लाई हेयर क्लिप है और कितनी सुंदर है यार। वाह कसम भाई। Welcome to my crib. Now back to the apartment tour. We are here at the entrance and जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि एशियंस अपने घर में शूज नहीं लेके जाते हैं, तो हम हैं एंट्रेंस पे जहाँ पे हमारे सारे शूज हैं। ये कब सोने लग गया भाई? Also मेरे एक पैकेज आया मैं तो अपना जूता पहन के अंदर चल देता हूँ। Let's just ignore that. ये क्या भाई? Introducing the Sandam. अरे लक्षा भाई। लड़के इस वीडियो को लाइक करेंगे, लड़के इस वीडियो पे कमेंट करेंगी, देखते हैं कौन जीतता है, या फिर से एक छपरी यूट्यूबर इंडियन सोन ओमेगल वाली वीडियो बना देता है। रिपीटेटिव कंटेंट की लिस्ट में टिकटॉक रोस्ट तो यूं ही बदनाम है। कभी इंडियन सोन ओमेगल सर्च किया है, या कभी यूट्यूब पे फूड चैलेंजेस सर्च किया है, या तुमने कभी प्रियंका तिवारी का चैनल देखा है? प्रियंका तिवारी के हिसाब से माने तो वो एक टीवी एक्टर है, मैंने तो कभी देखा नहीं। यूट्यूबर है, क्रिंज रील क्रिएटर है। स्टिल इनकी रील वीडियोस उस यूट्यूबर से तो बेटर है जो नोरा को लवरा बोल के कमेंट कर देती है। फॉर्चूनेटली कह लो या अनफॉर्चूनेटली इनका चैनल अभी रिसेंटली, फॉर्चूनेटली इसलिए क्योंकि कंटेंटली कह लो या अनफॉर्चूनेटली मुझे इनका चैनल अभी रिसेंटली सजेस्ट हुआ। फॉर्चूनेटली इसलिए क्योंकि कंटेंट की कमी चल रही है और स्पॉन्सर्स बहुत सारे हैं, और अनफॉर्चूनेटली इसलिए क्योंकि मुझे इनकी वीडियोस पूरी देखनी पड़ी। इनका चैनल बहुत बड़ा है, वहां पे तुम्हें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फूड चैलेंजेस, चैलेंजेस फूड के चैलेंजेस, लिविंग ऑन 100 रुपीज फूड चैलेंज, लिविंग ऑन 200 रुपीज फूड चैलेंज, लिविंग ऑन 1000 रुपीज फूड चैलेंज, 1000 रुपीज का फूड चैलेंज। तुम्हारे यहाँ चैलेंज बोलते हैं
इसको? हमारे यहाँ पार्टी बोलते हैं उसे। लिविंग ऑन 50 रुपीज चैलेंज, लिविंग ऑन 10 रुपीज फूड चैलेंज। पूरे दिन का खाना सिर्फ 10 रुपए में। भाई बंगाल में हो रहा है क्या फूड चैलेंज? टड़ंग टड़ंग टड़ंग। देखो कोई शेमिंग वेमिंग नहीं कर रहा मैं। अबे यार टड़ंग टड़ंग हो रहा है क्या फूड चैलेंज? टड़ंग टड़ंग टड़ंग। देखो कोई शेमिंग वेमिंग नहीं कर रहा मैं, लेकिन जिस इंसान के नेल्स ऐसे हो ना, उसका ओपिनियन और काम। देखो कोई शेमिंग वेमिंग नहीं कर रहा मैं, लेकिन जिस इंसान के नेल्स ऐसे हो ना, उसका ओपिनियन और काम दोनों ही मैं सीरियसली नहीं लेता। आज का बजट बहुत बहुत कम है। आपके आईक्यू से तो ज्यादा ही लग रहा है थोड़ा। यार पहले वाला लक्ष्य क्या रोस्ट करता था बे 2 साल पहले। ₹10 का खाना खाने के लिए 10 मतलब कर लाखों की मर्सिडीज। बस इतना अमीर बना दे कि ऐसे 10 रुपए का फूड चैलेंज करने 20 लाख की गाड़ी में जाऊं और 1000 रुपए का तेल फूकूं। चलिए भाई, चल के पहले दर्शन करते हैं, मास्क लगा लें, भीड़ बहुत है। आइए आइए। You won't believe guys, गणपति जी ने मेरी सुन ली और मेरा ब्रेकफास्ट सॉर्टेड हो गया। पता है कैसे? ये देखो, पंडित जी ने दिया है मुझे ये बड़ा सारा लड्डू प्रसाद। ये कौन बोल रहा है कि मंदिर सिर्फ प्रसाद खाने गई थी ये? नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा। एक आइडिया है मेरे पास। अरे रे चलिए देखो देखो देखो, मैं देख कहाँ आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ अपने अंकल के फार्म हाउस पे और यहाँ पे चारों तरफ लगी हुई है सब्जी और तरकारी। भाई ये हेयर स्टाइल कैसा है बे? अब यहाँ पे ना मेरा लंच जो है सॉर्टेड हो जाएगा। 10 रुपए लेके भंडारों में और रिश्तेदारों के खेतों में तो खाने की बात हुई नहीं थी। ऐसे तो मैं भी लिविंग ऑन 0 रुपीज फूड चैलेंज कर सकता हूँ जेल में। कैसे तोड़ते हैं गोभी? ऐसे घुमा के क्या? भैया मुझे तो आती ही नहीं गोभी तोड़नी। अबे पकी भी नहीं है गोभी पूरी। मैंने तो कभी गोभी तोड़ी ही नहीं है। कैसे पूरा ही निकाल लूं क्या? अगर तुम्हें लग रहा है ये वाहियात इफेक्ट मैंने डाला है, मेरे को तो ऐसी लगा। तो नहीं, तुम गलत हो। ये इन्हीं की शादी की कैसेट एडिट करने वाले एडिटर ने डाला है, जो पहले बालाजी टेलीफिल्म्स के डेली सोप एडिट करता था और रिटायर होने के बाद इनका एडिटर बन गया। पूरा पेड़ निकाल दिया मैंने। पेड़? वैसे एक गोभी में एक पेड़ में एक ही गोभी निकलती है क्या? चलो भैया ये ऐसा करती हूँ, इसमें से गोभी ले लेती हूँ और पेड़ जो है वापस गाड़ देती हूँ। इंडियन सोशल मीडिया से ज्यादा क्रिंज क्रिएटर कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ भाई अपनी बात कर रहा हूँ। और इनको जब इंटरनेट अब यार कैसा अजीब दिखता है लक्ष्य। सिंप फॉलो करते हैं ना, उसके बाद इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं ये सब करने के लिए। ये 24 घंटे का चैलेंज करने से पहले 72 घंटे तो इन्हें तैयार होने में लगते हैं, क्योंकि इनको भी पता है इनके फॉलोअर्स का कंटेंट से ज्यादा इन पे ध्यान होता है। 1 सेकंड, लक्ष्य का डिस्कॉर्ड भी है? ये कब हो गया? अभी के वीडियोस में डालता है क्या लक्ष्य ऐसा? लक्ष्य आयुष सपरा का देखना है फिर। आयुष सपरा धीरू मॉचिंग आई एम डेस्टिनी। अरे लक्ष्य आई एम डायनेस्टी। Go from Greek classics one day to Italian masterpieces the next. With Norwegian Cruise Line, every day is a new day. तो आज हमने 1000 रुपए खर्च करे हैं मैकडॉनल्ड्स में और 1000 रुपए ही खर्च करे हैं बर्गर किंग में। ये जान पहले बताओ 1000 रुपए का खाना खाता कौन है? के लिए कि कहां हमारे पैसे ज्यादा वसूल
बुरे होते हैं। आगे देखते मजा आएगा। सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स और बर्गर किंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स। मतलब बर्गर किंग हमारा 1000 रुपए में कम चीजें दे पाया कंपेयर टू मैकडॉनल्ड्स, लेकिन क्या वो चीजें इससे ज्यादा टेस्टी है? ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें। सबसे पहले हमारे पास मैकडॉनल्ड्स जो आया है यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे प्रीमियम रेंज का बर्गर, जो कि है महाराजा मैक वेज बर्गर। प्राइस इसका करीब 200 से 220 रुपए। ओहो बहुत बढ़िया भाई, देखो एकदम बर्गर की शक्ल देखो, माय गॉड बहुत ही ड्राई है यार, अंदर से चटनी नहीं लगा रखी, कसम से रेडी वाले भी लगा देते हैं यार, हरी और लाल चटनी, इतना तो कर दो। दूसरी तरफ उसके कंपैरिजन में हमारा आया है बर्गर किंग का सबसे पॉपुलर बर्गर, व्हिच इज देयर व्हॉपर, और इसका प्राइस भी करीब 200 रुपए के आसपास जाता है। और इसके अंदर आया है भाई ये बर्गर इसके अंदर देखो तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं दोनों बर्गर को एक बार पहले। हां वाह वाह, जैसे नाइदर मेरी हमेशा से बर्गर किंग प्रेफरेंस रही है कंपेयर टू मैकडॉनल्ड्स। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरा बताइए आप किसके साथ ही रहे और ये टेस्ट करते हैं यार। दिस इज आल्सो नाइस यार, मतलब आज मुकाबला जो है ना गाइस वो टक्कर का होने वाला है, लेकिन फिर भी देखते हैं। मैकडॉनल्ड्स हमारे पास आया है इनका चिकन रैप और यहां से हमारे पास आया है इनका वेज पनीर रैप। प्राइसेस इनका करीब 200 रुपए के अराउंड जाता है। 1000 रुपए से 400 रुपए का मेजर बजट हमारा इन दो आइटम्स में खर्च हो गया। बाकी सारे आइटम सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में आए हैं। इसके अंदर चिकन की पैटी रहने वाली है और इसके अंदर रहने वाला है आपका पनीर। कुछ भी नहीं आपसे मेरा लेना देना। टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट किसका बढ़िया है। कुछ भी नहीं आपसे मेरा लेना देना। टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट किसका बढ़िया है। The best thing I like about this कि इसके अंदर एक स्पाइसीनेस होती है जो कि इस रैप को भाई सुपर डिलीशियस बना देती है। अभी ये वाला टेस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, आज पहली बार हुआ यार कि मुझे वेज नॉन वेज से बेटर लग रहा है भाई। मेरे ख्याल से ना अगर बर्गर किंग की सॉस बाहर की रोटी अगर इसके चिकन के साथ खाई जाए ना तो मेरे ख्याल से इसका इससे बड़ी इनको कोलैबोरेशन करना चाहिए यार। अगली चीज हमारे पास मैकडॉनल्ड्स का ये बर्गर, इसका नाम है मैक आलू टिक्की। मतलब मैकडॉनल्ड्स की रेंज का सबसे पॉपुलर बर्गर यही बर्गर है, मैक आलू टिक्की बर्गर। पहले 28 रुपए का गाइस एक बर्गर आया था और आज ये बर्गर 50 रुपीस में मिलता है, शायद उससे भी महंगा टैक्स मिला। और दूसरी तरफ बर्गर किंग से हमारे पास आया है ये टैको, देख लेता हूं कैसा है भाई। आज कसम से बर्गर किंग ने आग लगा दिया। चल भाई हमारा केड़ा है ये करते हैं। ये कौन सी ऐसी प्रजाति है जो आज भी खा रही है? ये बर्गर कितने बिक रहे हैं? क्या है इसमें? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मतलब बर्गर के नाम पे अलग है बर्गर। अगर आप जाते हैं दोनों की कैटेगरी में फ्राइड चिकन, और इस बारी जो मैकडॉनल्ड्स वाले फ्राइड चिकन की शक्ल है ना कुछ ज्यादा बेटर लगी है हमारे बर्गर किंग के फ्राइड चिकन में। ओके ये बेसिकली चिकन नगेट्स है जो कि टेस्ट बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, लेकिन स्पाइसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा मिसिंग है, जो कि होती तो शायद चीजें बेहतर लगती। वाओ आई लाइक इट। इस राउंड में जीता है मैकडॉनल्ड्स। अगला हमारे पास मैकडॉनल्ड्स से चिकन नगेट्स और बर्गर किंग से कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका एक आइटम कम आया था ना। ये काफी प्लेन और काफी फीके आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ ऐसी दिखती है हमारी मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज, बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन। तो इससे हमारी बर्गर किंग की फ्राइज कुछ ऐसी दिखती है। नाइस लाइक इट। ओके नेक्स्ट हमारे पास मैकडॉनल्ड्स से इनका ये पिज्जा मैक पफ है। कार्तिक आर्यन का मैक पफ है, अबे पर अंदर की चीज वही है भाई। वाह दिस इज बैड, वेरी बैड, दिस शुड नॉट बी ऑन द मेन्यू यार। चलिए अब आपको दिखाते हैं दोनों ब्रांड्स के बेसिकली डेजर्ट। वैसे चम्मच तो है नहीं तो मेरे को ऐसे ही पीना पड़ेगा यार। आइसक्रीम की फॉर्म में अच्छा था। दूसरा हमारे पास बर्गर किंग की तरफ से आया है ये चोको लावा केक। नाइस, ये बर्गर किंग की कोल्ड कॉफी ब्लेंड काफी अच्छी हो रखी है, शुगर भी बड़ी बैलेंस्ड है। दिस इज नाइस, दिस हैज अ टेस्ट ऑफ कैरेमल। और अगली है कोल्ड ड्रिंक जो कि मेरे ख्याल से यूजलेस है टू टेस्ट एंड रिव्यू, लेकिन फिर भी गाइस मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मेरे को जो सबसे ज्यादा और वैल्यू फॉर मनी लगा है ना टू स्पेंड 1000 रुपीस, दैट इज द ब्रांड बर्गर किंग। डिस्पाइट वहां पर आइटम बहुत ज्यादा कमाए, लेकिन आइटम्स की क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी क्या प्रेफरेंस है, बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय। The future of this planet is dark, with code leading it to the worst future for everyone due to what he has done to the Tentals. But Boruto has seen it all. The future that awaits the village is clear to Boruto, leaving us with two problems. What did Boruto see, and will Boruto be able to prevent this dark future? As Boruto's focus isn't on Kawaki or even stopping the omnipotence, Boruto doesn't care about that. What he has to do is protect this world, even if he is wrongfully hated. Boruto's new story now begins, with its theme being if one can change the future/destiny. And this arc will reveal the answer to that question. But one of the questions that has to be answered is how? How is Boruto able to know the demise that awaits the planet? How does Boruto know so much about the Tentals? The most popular theory at this moment is that Boruto has gone back to the past, and this theory is extremely popular on TikTok, so let's break it down. To the question of how does Boruto know so much, the answer that this theory proposes is that Boruto went back to the past, where he was able to learn the truth about the Tentals. And this may have been foreshadowed before the Boruto series came to be. So let's discuss all the foreshadowing that has been given to us that hints to this theory being true. First of all, Code says that he fought Boruto in the time skip, but after that, he was looking for Boruto continuously, but just couldn't find him, as if he had simply vanished from this world. Secondly, Boruto knows so much about the Tentals, and it is in the Naruto series and in that timeline that we are first introduced to the Tentals. Next, we see that in the time skip arc, we have Otsuzukis who have technology that allows them to go back in the past in various events that occurred previously. Last but not least, we see a shadowy figure with a cloak in the fight between Kaguya, Team 7, and Obito. It is that person who is on the mountain. All of these things have led a large majority of people to believe that Boruto went back to the past to learn about the Tentals and potentially even do something or take something from that timeline. This decision to go back to the past for Boruto would have been a great decision, as it would have allowed him to go back to the past and learn about the Tentals, but also hide from people like Code and various shinobis who have been tasked with looking and capturing Boruto. However, the problem arises when we discuss if there was really a shadowy figure in that location in the mountain, as a lot of people believe that that shadowy figure is simply Sakura. Sakura went there as she was gearing up to fight Kaguya, and she was left there after Obito came to help Naruto and Sasuke out. So what we must do is determine whether that was Naruto and Sasuke out. So
What you must do is determine whether that was Sakura or not. In chapter 687 of Naruto, we see Obito and Naruto with what appears to be a shadowy figure behind them. So the first step would be to determine where everyone else is supposed to be. Kakashi and Obito are running to go and protect Naruto and Sasuke from Kaguya's Bone Ash Jutsu, which would have killed Sasuke and Naruto instantly. But Obito protected Naruto and saved Kakashi, who was going to run to protect Sasuke. So we know everybody's location apart from Sakura. Whenever you're analyzing something, you have to make sure that you are the least biased possible, or else there is simply no point in analyzing anything if you're just going to lie to yourself. The shadowy figure is not a mistake. There is definitely someone there, as it is shown in the anime too, as you can see right here. But if you go back a couple panels, because I am sure a lot of people didn't actually read this chapter, you would see that Obito and Sakura are together a couple panels ago. Then we see Obito, who jumps off a cliff to save Naruto and Sasuke. Kakashi runs straight as shown by the lines, and Obito jumps down from a cliff as also shown by the lines to save Naruto and Sasuke. He, prior to that, was with Sakura. Are you a student who learns from example? The most popular theory at this moment is that Boruto has gone back to the past, and this theory, if Kishimoto wants to do it, so it doesn't mean that this is completely void. This theory could come to be, but with the evidence presented, I don't think this would be the case. And also, I don't want Boruto to go back to the past, potentially influence the Naruto series and its writing itself. Sakura came back and ruined everybody's theories. And I'm not going to act like I didn't believe this theory at first. I did believe this theory in the past, but I went back to reread this chapter over and over again and had a lot of discussions with my friends who were unbiased and didn't even know about this theory, and we all came to the same conclusion. This is Sakura. It is not Boruto or anybody else. So let me give you a quick recap to make sure you understand everything. Obito is with Sakura on a cliff where there are multiple different triangle gravity things. Then, noticing that Kaguya is about to use her Bone Ash Jutsu, aka her instant death jutsu, Obito jumps from the cliff onto another landscape of triangle gravity things so that he can save Naruto using his own body. Then he uses Kamui to take away the Bone Ash Jutsu from Sasuke, saving Kakashi, who was going to put his body in the line. Then Kaguya switches to another dimension and we see Sakura further away from Naruto and Obito. This is the simple and the most logical answer that I have seen out there. I'm just going to say it. The first clue that we should have known is that this theory is extremely popular on TikTok. That should have been the first clue that this theory wasn't actually going to be true. A lot of people do believe it. It could be a potential retcon if Kishimoto wants to do it, so it doesn't mean that this is completely void. This theory could come to be, but with the evidence presented, I don't think this would be the case. And also, I don't want Boruto to go back to the past, potentially influence the Naruto series and its writing. I don't think Kishimoto would want to do something like that and potentially risk having things in the Boruto timeline potentially affect the Naruto timeline, and then it will become like Dragon Ball Super with the Zamasu stuff. We all didn't like that arc, so I don't think we're going to see that again. I don't think Boruto went back to the past to go and see something in that timeline, because you also have to remember, if Boruto was going back to the 4th Great Ninja War, then it would mean that we would already know what this threat is, but we clearly don't know what the threat is, so Boruto would gain no knowledge by going to the 4th Great Ninja War timeline. I don't think there's any information that Boruto would get, because if there was, we could have already known what is awaiting the planet, but we don't. So we are back to square one. How did Boruto find out so much information about the Ten Tails, and how is he able to know the outcome that awaits this planet? This is where a lot of people would say that Momoshiki must be the one who told him about the Ten Tails and almost gave Boruto a heads up of what may potentially await the planet. We know that Momoshiki has thousands of years of experience and that he has been eating multiple different chakra fruits, and in chapter 75 we come to learn that he knows about people like Shiba Otsutsuki, which displays his
एक मिनट
level of knowledge. As in that very same chapter, Momoshiki tells us that he knows almost all the various different types of shinjutsu that are out there. When he says, I too have observed this plan along. For some reason, the daughter of the Uchiha didn't seem to be affected. Well, generally, the only one who suffers by omnipotence are those people. Time ago, and have intimate understanding of all shinjutsu. However, he did not understand where exactly Ida's abilities came from, as he didn't believe that was a shinjutsu ability. But it was only after chapter 75 that he found out what exactly. As I said just now, I know all shinjutsu, but I never heard of such an ability. In short, it is possible that was Ida's charm. After chapter 75 that he found out what exactly was Ida's charm ability, but he refused to tell Boruto, and we know what happens next. Boruto loses everything. Hey! In an epic turn of events, as Ida's powers originate from the gods of the gods, Shiba Otsutsuki, and her power was omnipotence, which allows her to turn a simple wish into reality. Remembering this just brings back all the best memories I had with chapter 79. It was an amazing chapter. But Kishimoto is building another prophecy-like event right now, and Boruto is the one this time telling the prophecy that awaits Code and this planet as a whole. But I don't believe this is the exact answer. I don't think Momoshiki has pre-existing knowledge on Code and the Ten Tails, because it is made quite clear that Code has done something to the Ten Tails that resulted in this, meaning that this may be one of the first times this has ever happened. As pay attention to what Boruto is saying, and try not to get swayed by the way Boruto sounds so cool. I know he became that guy, but Boruto starts off the conversation sounds so cool. I know he became that guy. But Boruto starts off the conversation by saying to Code that you don't know the true horrors of the Ten Tails, where Code then answers by saying, I know plenty about the Ten Tails. They devour Otsutsukis. Well, in truth, they are beasts that just instinctively bite into anybody in their vicinity until they eventually run into an Otsutsuki. Let's stop right there. We already know this piece of information. We've seen this happen in the past when Sasuke went into Ishiki's palace and he went near the Ten Tails and the Ten Tails tried to eat him, as it made some eating movements. This was the same with Jigen, who pulled up next to it and it also tried to eat him. The key thing here is that the Ten Tails is supposed to act off instinct, meaning it is an untrained animal operating strictly off instinct, which is why it goes berserk all of the time and ultimately had to be split into 9 Biju, who became sentient beings, meaning that they were able to think and have some sort of rationality, which is quite evident when we see Kurama, who literally came up with a scientific ability like Baryon Mode, which displays that he had the mind and the capabilities of understanding these various different concepts. Make sure you keep this in mind because we're going to come back to this later. So continuing, Boruto says this: that might normally be the case, but these ones are different thanks to you enhancing them. This is very important because it means that by Code creating the claw grabs, he completely changed the Ten Tails itself through the ways that he has enhanced them. So in chapter 72, Code uses his claw marks and molds the claw grabs like clay into what we see right now, the claw grabs. What is quite interesting is that the claw grabs are able to pass through his claw marks, which is a feat that is only capable of doing when Code is grabbing onto you, a bit like how Goku uses instant transmission. This would mean that the claw grabs have access to Code's abilities, or just his claw mark ability, as they literally have claw marks all around them. But Code didn't get this ability from birth. This is not his own ability. In actuality, this is a shinjutsu. We know that he is a regular human, or he is made to believe that he's a regular human. We don't know too much about
about Code and his backstory. So how does someone like Code have such an ability? I don't think it comes from Ishiki, because we know that Ishiki never had such an ability, which only leaves one person, Shiba Otsutsuki. We know that his DNA grants people crazy-like abilities, like we have seen in chapter 75. And in that same chapter, we are told that Ida and Damien's abilities are from Shiba Otsutsuki, and we are told that Kawaki's Sukuna Hikonen is a Shinjutsu that comes from Ishiki Otsutsuki. Code is the only one who we are Shinjutsu DNA, which only leaves one person, Shiba Otsutsuki. We know that his DNA grants people crazy-like abilities, like we have seen in chapter 75. That ability. I don't think it comes from Ishiki, because we know that Ishiki never had such an ability, which only leaves one person, Shiba Otsutsuki. We know that his DNA grants people crazy-like abilities, like we have seen in chapter 75. And in that same chapter, we are told that Ida and Damien's abilities are from Shiba Otsutsuki, and we are told that Kawaki's Sukuna. In addition to it, and Demon already quotes are also Shinjutsu, as there are Sukuna Hikona and Dai Kokuten that Kawaki inherited from Ishishiki. Sukuna Hikonen is a Shinjutsu that comes from Ishiki Otsutsuki. Code is the only one who we are not told where his abilities come from. We are just simply told that his ability is Shinjutsu. मार कसम कितना ऐड है बे. So maybe it is not even Shiba Otsutsuki, and it's potentially a whole different Otsutsuki that Amaru is hiding. I just thought of this right now, but we still don't know who the missing Otsutsukis are. The ones that we saw in chapter 35, which makes a lot of sense now. Maybe Code has an ability from these Otsutskis that we see in Ishiki's palace. Maybe it is from Shiba, or it's from one of the missing Otsutskis that we see in Ishiki's palace. But nonetheless, by Code creating the clograms, he mixed his chakra, which may come from Shiba Otsutsuki, or the missing Otsutsukis, which have resulted in him enhancing the 10 tails as a whole. As we now see that the clograms have been granted new abilities, they can go through Code's clograms, and it seems like the 10 tails has evolved. And just like Otsutsukis, it appears like these clograms are evolving. By Code mixing his chakra with the 10 tails, it seems like he has created an evolved version of the 10 tails, which is sentient, or a mixed version of the 10 tails with Otsutsuki DNA and part 10 tails DNA, which created some sort of crazy hybrid race Otsutsuki being. I don't know what we would call that, but some crazy being completely different from what we have seen before, which may very well become an unstoppable threat, leading to an even worse future than Code planting a chakra fruit and destroying this planet entirely. And I would say that we're given a pretty big clue for this being the case, as in the very same chapter, we see one of the clograms evolve, which he is literally described as a superior. Clue for this being the case, as in the very same chapter, we see one of the clograms evolve. Renegan. Which he is literally described as a superior being by Shikida, and he also starts mustering words, which is a feat that is impossible for the 10 tails to do. The 10 tails always made animalistic sounds that were incoherent and were not understandable. But this superior clogram with the Renegon was able to address Kawaki, calling him an Otsutsuki. And it's even kind of interesting that this clogram was the one who didn't try to bite someone, as we see all the other clograms always try to bite someone off first contact. But the evolved one grabbed Kawaki by the neck and slammed him to the ground and didn't even try to bite him until he found out that Code was an Otsutsuki. That's when he tried to bite him. But Shikida was there and had paralyzed him, which means that by grabbing Kawaki, the clogram was able to figure out that Kawaki was an Otsutsuki. And it was only after that he attempted to bite Kawaki, but Shikamaru used his shadow paralysis. This makes perfect sense to me and shows that the clograms have become an even bigger problem, as the clograms who are not yet evolved just bit people randomly and turned into trees that would never bear fruit, which is why I personally don't believe that they evolved by eating people, which explains why the evolved clogram didn't try to eat Kawaki before he figured out that he was an Otsutsuki, which would give us a pretty big clue that they don't evolve by eating people and that they simply evolve passively through time, which is even worse than evolving by eating people, because this doesn't require anything. The more time you give these people to be alive and to continue observing everything that is going on, the greater threat you are building. This is quite evident and tells us that these clograms are developing a mind of their own, and it won't take too long for them to rebel against Code. And this is what seems to be foreshadowed right now, as Boruto tells Code, you need to scrap them while you still hold their reins, or else we'll end up in the worst future for
everyone. This makes so much sense to me when you realize that the Clograms are developing a mind of their own, which means that they will be able to rebel against Code. This is why Boruto tells Code to get rid of them right now, while he still has control over them, meaning that there will come a time where Code loses control of the Clograms, leading to the worst future for everyone. This is the future that Boruto has seen. And when Boruto says everyone, we are talking about the entire planet as a whole, as you have to remember that it has been said that Code has his claw marks all over the 5 great nations, which would mean that if Boruto is unable to prevent this future from happening and the Clograms continue to evolve passively, then they would be able to develop their own personal tactics, their own personal plans for this planet, and literally take over, going to multiple different locations at the same time, with their large numbers through the Clograms that they have access to, due to them पक्का ऐसा हो के ही रहेगा चाहे तुम कुछ कर लो. DNA, which would very well lead to the destruction of not only the Leaf, but also all the great nations that are out there. This would definitely be the worst future for all. And if you think Code will end up dying, this might be the moment where he dies, as we know that he is not the smartest, which would mean that he could experience something like Madara, where he is backstabbed. मैंने काई से कनाई कर काई दोरी. By the one who he believes he has created. For Madara, that is Zetsu, and for Code, that would be the Clogline. But for me, when Boruto says a future that is worse for everybody, he includes Code. And we have Code who says that I'm trying to plant a chakra fruit, so the worst future for everybody is what I am trying to do. But if Boruto doesn't agree with that, it would mean that it is not only on the scale of the planets, and that it could also be to the point that it affects the universe as a whole. But we'll have to discuss that in a completely different video, where we discuss more about these new villains that we are about to get. But there's also another rather interesting interpretation and theory that I haven't heard anybody discuss, and that has to do with the Renegon that we see the Clogline awaken. I don't think it's the same way as Sasuke awakening his own Renegon. It's more like Nagato, or maybe Obito, when he had control of all the Jinchurikis, and we saw all of them with the Renegon, where each of their eyes are connected and allows each other to see the various locations that each has, awakening his own Renegon. It's more like Nagato, or maybe Obito, when he had control of all the Jinchurikis, and we saw maybe instead of the Naruto of all of them today, with the Renegon, where each you should study who Naruto was in the past. Of their eyes are connected and allows each other to see the various locations that they are looking at. All these different eyes are connected and serve as additional eyes for the person who is controlling them. So in this case, the Clogram that we are seeing is under control of a superior Clogram. And by the Renegon appearing on that Clogram, it signifies that that superior Clogram was looking into the battlefield and trying to figure out what was going on. I believe that that superior Clogram is not in the Leaf, but is passively evolving where Code kept the remains of the Ten-Tails and his husk. And that will be the new villain that will replace Code and end up backstabbing him, and just like Black Setsu, as he is chilling and passively evolving, observing the fight that is occurring in the village and learning and adapting. But we still haven't answered the question of how exactly Boruto was able to see the future. I don't think he went back to the past because one is probably sorry and adapting. But we still haven't answered the question of how exactly Boruto was able to But we still haven't answered the question of how exactly Boruto was able to यार नारुतो की बात ही अलग थी. क्या लुक था भाई नारुतो का. बोरुटो की फुल छपरी है. see the future. I don't think he went back to the past because one is probably Sakura, and there isn't a lot of information that he could learn in the 4th Great Ninja War that would give him information on the future that awaits the planet. It is also not that Momoshiki told him, because it is something that Code did to the Ten-Tails. It's not something that may have occurred in the past. So I don't believe that Momoshiki has seen evidence of this happening before. However, I do believe that Momoshiki played some sort of part into this. As in chapter 75, we are told, अगर नारुतो के पास उसका नाइन टेल्स ऐसा बोलता, बेटा तू लड़ेगा मेरे से, है कोड, इधर आइयो, तेरी मैं. That not only are Boruto and Momoshiki's minds, they are merging, but we are also shown the result and outcome of their minds merging. As Boruto is now able to see the same tableau as Momoshiki, which allowed him
him to see the future that awaits him. And this was about 3 years ago. So imagine the state that Boruto and Momoshiki's merger is in right now. On top of the fact that Boruto has probably mastered Momoshiki's abilities, reinforcing this idea, Boruto would also have access to Momoshiki's senjutsu, which allows him to see the future, which is what I believe allowed him to see the worst future for everybody. Momoshiki and Boruto don't usually work together, but for the survival of their shared body, they are shown to cooperate at times, which was on full display in chapter 80 and various other chapters that occurred in the first part of Boruto. And this future could be so bad that even Boruto and Momoshiki would have to work together for the greater good of the planets. This is what I thought at first, but this is no longer the case. We know that Otsutsuki's have a strong belief in destiny, as Momoshiki told Boruto that there was nothing he could do to prevent the destiny that awaited him. This was one of the goals of Boruto at the time, as in the last episode of Boruto, we see that Boruto and Kawaki have a rather interesting conversation, where Boruto tells Kawaki about his prophecy and tells him that he will do everything to make sure it doesn't come to pass. Where Kawaki asks him what is everything, just so he can make sure that he ends up taking it. But Boruto was not able to prevent the future, as he did end up losing everything. But even though that was the case, he wasn't sad in chapter 80. He had such a beautiful smile. But what happened to that smile? The smile that Boruto once had seems to be gone, and this may very well be the theme for the second part of the Boruto series. If one could really go against their destiny, as this was the case for Naruto, as he was destined to be secluded and hated by the village, but he overcame that destiny, made friends, and ended the cycle of hatred by saving his friend. This is why Sasuke tells Boruto that if he is truly Naruto's son, he should be able to do the same and overcome this so-called destiny that awaits Boruto, as he is blessed with the ability to see the future, but will he be able to prevent it? If not, it will turn out to be a cursed ability for Boruto, where he can see the future, but he cannot prevent it. This is why Tonori's words are key. With destiny as your opponent, how will you keep fighting until the bitter end? This is what Tonori tells Boruto, and this is another reason why you have to watch this video right here and learn exactly how Boruto's ability to see the future exactly works. When you get your next big idea, say sparkly ketchup, Grammarly's told. तो ये है देवी और सज्जनों 20 रुपया का सैंडविच, ये है देवी और सज्जनों 200 रुपया का सैंडविच, और ये है 1500 रुपया का सैंडविच। स्वागत है दोस्तों आपका एक और एपिसोड में चीप मीडियम एक्सपेंसिव फूड के, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सैंडविच। मतलब बड़ी बेसिक टमाटर प्याज लगते हैं और कितना 5, 10, 15 रुपए का रॉ इंग्रेडिएंट्स लगता है, वैसा आइटम आपको 1500 रुपए में मिलेगा। आप सोच सकते हो, वही है सैंडविच में। तो इसको अभी करते हैं साइड, क्योंकि हम दिखाएंगे एंड में, क्योंकि एड से पैसा भी कमाना है ना। चलो अभी हम आपको दिखाएंगे 20 रुपए का सैंडविच। 20 रुपए का सैंडविच बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग में आता है, मतलब ऐसी ब्रांडेड पैकेजिंग। ये आपको दिखाया है वाटरप्रूफ पैकेजिंग, आपको दिख रहा है बढ़िया कलर, इसमें चित्र से रंग बिरंगी पैकेजिंग। क्या पैकेजिंग है यार, मजा आ गया। इसको फाड़ने का तरीका बड़ा सिंपल है, 2 दांत पन्नी में घुसाने हैं और एक पैकेट फट जाएगा। बहुत आसान होता है इसको फाड़ने का तरीका। उसके बाद सही कमरे में फैला दीजिए, फिर आपकी मम्मी झाड़ू से मारेगी, बोला पानी से भी पतली चटनी पन्नी में डाल के दी जाती है ना, ओहो मजा आ जाता है दोस्तों। बड़ा ही प्लेन, बड़ा ही सिंपल सा सैंडविच है। 2 अपनी मैदे की ब्रेड है, जिनके कोने काट दिए गए हैं, कुछ बेसिक वेजिटेबल, और जैसे कि इसके अंदर गाजर, खीरा, मूली, प्याज, अदरक। अगला चलिए गाइस। दिमाग इसकी चटनी, मतलब देख रहे हो कितना कन्वीनियंट मेथड है चटनी निकालने का। आपको फाड़ने की जरूरत नहीं है, कैसी ढूंढने की जरूरत नहीं है, उछालो, हाथ में पकड़ो और चटनी आपके हाथ में। फिर आप हाथ को ऐसे प्लेट की तरह इस्तेमाल करके ओहो, तुम्हारे हाथ की मिट्टी का स्वाद आ रहा है ना, मजा आ गया के बाद भाई, एकदम गीला और घिनौना है सैंडविच। लेकिन 20 रुपए में आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। टेस्टी होता है, टेस्टी नहीं होता भी रख सकते हैं, पेट भरने वाला हिसाब किताब होता है। अब आपको दिखाते हैं मेरा फेवरेट सैंडविच, मतलब मुझे अगर सैंडविच खाना है तो मैं यहीं से ही मंगाऊंगा हर बारी। तो इसका नाम है अफगानी सैंडविच, हॉट स्पॉट मिनी शॉप एट नीताली सुभाष प्लेस। 200 रुपए का सैंडविच आता है, हां इसे कहते हैं गाइस सैंडविच। एकदम अनहेल्दी लेकिन एकदम टेस्टी, शक्ल से ही बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है। हाय 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 हाय, तैरती हुई मेयोनीज तंदूरी सॉस की लेयर। अंदर देखते हैं अंदर क्या है। अंदर हमारे पास प्याज, शिमला मिर्च, ओहो ये लो। अब ये है अगली लेयर, जिसके अंदर है लाल चटनी, तंदूरी सॉस, जिसके अंदर है पनीर पनीर गाइस, पनीर मिला है 220 रुपए के सैंडविच में। अगर मुझे 1500 के सैंडविच में पनीर नहीं मिला तो मां की आंख में ललित में जाके हल्ला मचा के आऊंगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। ओहो पत्थर था गया। ओहो 1-2 कंकड़ निकले हैं, लेकिन टेस्ट भाई दुनिया से अलग। मैं ऐसे टेस्ट के लिए मैं 2-3 कंकड़ तो यूं अवॉइड कर दूं कि छोड़ यार, मेरी लिस्ट में सैंडविच पीक यहीं पर कर जाओ। इससे ऊपर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा टेस्टी सैंडविच नहीं बन सकता। आपने बेस्ट सैंडविच कहां पर खाया दिल्ली में, आपने शहर में? मुझे प्लीज बताइए। हम बढ़ते हैं हमारे हीरो की तरफ। ललित का सैंडविच यानी मैं एक्चुअली इस हीरो के साथ आए थे 3 डब्बे। अगर आपने बर्गर वाली वीडियो देखी होगी तो आप जान रहे होंगे कि चटनी का हमने क्या करा था। 1500 रुपए का सैंडविच मार दिया, मेरी मम्मी को हाथ में लगा यार। 1500 का सैंडविच अगर मैं सुन लेंगे तो मतलब मार दिया। मेल्टिंग चीज सैंडविच, क्लब सैंडविच, मेरी मम्मी को हाथ में लगा यार। 1500 का सैंडविच अगर मैं सुन लेंगे तो मतलब 2 ब्रेड के टुकड़े, सब्जियां आप कितना बड़ा लोगे भाई। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले चटनी है साइड करते हैं, छोटे डब्बे में देखते हैं। छोटे डब्बे में हमारे पास है फ्रेंच फ्राइज, वेरी नाइस। 1500 रुपए ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज मिल रही है जो आपने ऑर्डर नहीं करी थी, तो आप देखकर थोड़े खुश जरूर जाओगे। ओ भाई साहब, तो ऐसा दिखता है 1500 का सैंडविच। तो आपको दिखा, ओहो ये क्या हालत हो गई। एक तो डिलीवरी में हालत बहुत बुरी हो गई सैंडविच की, पहली चीज। दूसरा मुझे शक्ल से बहुत हड्डी लग रहा है यार। ये हमारे पास ब्रेड का पीस, जिसमें एक वाली महंगी वाली चीज स्लाइस लगी हुई है। अगली लेयर है जिसमें है शिमला मिर्च, इंपोर्टेड वेजिटेबल्स है मेरे ख्याल से। तीसरी लेयर, इसके अंदर है खीरे। ठीक है भाई, मेहनत करी है भाई, शेफ ने मेहनत करी है बनाने में, ऐसे कुछ भी लपेट के नहीं दे दिया आपको। अगर चीज स्लाइस हटा दी जाए तो सैंडविच को आप थोड़ा बहुत हेल्दी भी कह सकते हो, बट शक्ल से ये 1500 रुपए, मतलब इसके मुंह पे इंस्टाग्राम में फिल्टर आता है ना, वो लगा के आपको बहुत मुश्किल रहेगा बुलाने में 1500 का सैंडविच है भाई। 1500 लाइक ठोक देना कम से कम इस वीडियो पे, बट हो जाए मेरा सैंडविच बनाना। चलो
ओहो, अगर मैं आपको 2 शब्दों में इसका टेस्ट बताऊं ना तो आपको कच्चे खीरे और ब्रेड का टेस्ट आएगा, बस ब्रेड का, सिर्फ इतना ही है। ब्रेड सीक्रेट है और उसमें वेजिटेबल डाल रखे, जस्टिफाइड नहीं है अपने प्राइस को, किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, दूसरा सैंडविच थोड़ा सा अलग है, इसको देख लो एक बार आप, कैप्सिकम्स, बेल पेपर, जो आइडेंटिफाइबल वेजिटेबल्स इसके अंदर दिख रहे हैं, चीज स्लाइस है। लेकिन अगर भाई मुझे जंक खाना है ना और मुझे टेस्ट लेना है, मतलब जायका लेना है ना मेरी दुकान पर, मैं तो 200 वाला सैंडविच खाऊंगा। आप ये 1200 रुपए का सैंडविच खाना चाहोगे या नहीं, 1500 रुपए का सैंडविच खाना चाहोगे या नहीं खाना चाहोगे, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली कौन सी आइटम मुझे ट्राई करनी चाहिए चीप मीडियम एक्सपेंसिव सीरीज में, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और आप ये 1200 का सैंडविच खरीदेंगे, आप ये 1500 रुपए का सैंडविच खरीदेंगे, ये भी प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं आपको अगली भाइयों अब हमको नींद आ रही, सो अब कल वो भी करना है, क्या बोलते हैं, कन्या भोज। सो बाय बाय, टाटा, पीस आउट, बाय बाय गाइस।